चलो again one. From a point on a variable line y equal to x plus c, tangents are drawn to the hyperbola such that their chord of contact passes there. Okay, tangent c. Tangent c chord of contact. Wait, what? Tangents are drawn to the okay, hyperbola. अच्छा, okay, समझा. Their chord of contact passes through a fixed point x1 y1 then x1 okay upon हाँ ठीक है तो ये जो line है that is the polar of this pole, right? Okay, what does that mean? Like x1 क्या होगा ये x1 x minus 2 y1 y equal to 2, right? That's our line. और इसको कंपेयर करो इस चीज से, just what x minus y, इसको माइनस में कर डालो. So x minus y plus c is equal to 0, right? ऐसा हो जाएगा. So yeah, x1 upon y1 क्या होगा basically, right? So like 2y1 upon x1, right? Because yeah, that will just be equal to what? It's just equal to 1. So x1 upon y1 is 2. So A is the answer. Next question. 102. 102 is Q is a point on the auxiliary circle corresponding to point this thing. Okay, point P on, wait, what? Point on auxiliary circle. Okay, fine. So stretch the वापस करो तब. If T is the foot of perpendicular dropped from the focus S onto the tangent to the auxiliary circle at Q. Auxiliary circle ellipse. थोड़ा बड़ा कर डालते हैं, राइट? तो P का तुमने Q कर डाला है, so ये P है, तुमने उसका Q कर डाला. T is the tangent, wait नहीं, T is the foot of perpendicular dropped from the focus S. Okay, so यहाँ पे S होगा कहीं तो भी, जैसे ये S है और I don't know. Okay, to the tangent to the auxiliary circle at Q. So basically इस पे, right? तो क्या करना है? Then triangle SPT is, अच्छा, so SPT. Oh, this triangle. Okay, very weird. Uh, like I've seen it somewhere. I don't know. We know कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होने वाला है. Like, we know that at least. ये 90 डिग्री होगा. We know that stuff, but oh, okay. Wait, जहाँ भी कट करेगा वो भी तो इनफैक्ट इसमें. Okay, actually we should draw a better figure than this thing because yeah, it doesn't look very correct. तुम्हारा जो P है that's maybe some point over here, तो तुम उसका Q यहाँ पे आएगा. So this is our tangent. Probably this looks like the tangent. हमारा जो S रहेगा that is yeah, somewhere over there. I don't know. Or that should be perpendicular to this guy, right? Well, yeah. So यहाँ पे जो wait, यहाँ का टेंजेंट का स्लोप ही अलग रहेगा ना मेरी बात तो. Yes, इसका स्लोप ही अलग रहेगा. So that doesn't make any sense. So अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, right? इसका यहाँ पे कट होने वाला है, which means कि actual में this can't be the focus. This is actually just too okay. Slightly like this. I don't know. ऐसा गलत हो गया ना? Better, right? So यहाँ से this is the tangent. We just want like perpendicular, so it should be perpendicular to this thing, right? This is our S point. ये इससे perpendicular है, and then this is just weird. And you want something about triangle SPT. At least it's any random point. Unless okay, wait, मैं इसको stretch किया है. That is somewhat important कि तुमने इसको stretch किया. तो initially S एक random point था, क्योंकि इसमें से कोई भी चल जाएगा. Not exactly. It's not exactly random. SPT. ये P है यहाँ पे. This thing is actually T, right? Okay, this thing is S. This thing is E. This thing is T. What about this? Isosceles, equilateral, right angle, right isosceles. This is very weird. कोई अच्छी प्रॉपर्टी है जो इसमें अपन यूज कर सकते हैं? I don't think there is anything like that. ST somehow useful है क्या? No, वो लेंथ डायरेक्टली मिल पाएगी. This is not helping. Maybe it is in fact right angle, who knows? But how do you prove that? You can't prove it, unfortunately. Okay. Well, it can't be perpendicular because okay, so it can't be right angle because then
not make any sense, right? Ah, just take an example, right? Yeah, या फिर normally करो, who cares? So क्या ये x और upon r, ठीक है? So this thing is what, like a cosine theta comma b sin theta. Okay, ये जो q रहेगा that's like a cosine theta comma a sin theta. Okay, cool. And you want to find t somehow. Oh god. So like x minus, this is like what? So ये वाला नहीं, ये वाला फोकस यूज कर लेते हैं, who cares? It's just x minus a e upon, well ये इसका नॉर्मल क्या है? Normal vector is just this vector, right? So it's just cosine theta comma sin theta, that is the normal vector. So upon cosine theta, I mean this is gonna be like this thing, x cosine theta plus y sin theta, ये जो line रहेगी just this thing, and that's equal to a, I guess, because yeah, so like that's the thing. So upon cosine theta is equal to just y, because 0 तो यहाँ पे, upon sin theta is equal to what? Negative, अपने को इमेज चाहिए, right? ax plus b by the c, मतलब कि क्या, just put that in there, just कौन सा वाला point? a e comma 0, right? Just a e cosine theta minus a, okay, familiar, I've seen this somewhere, right? Yeah, upon what do I want though? ये चीज upon this thing, just one, right? Yeah, so क्या हो जाएगा? a e comma 0 plus cosine theta comma sin theta times this stuff, like negative, क्या आएगा देखो इसमें? Okay, this thing, a times of 1 minus e cosine theta times cosine theta comma sin theta, right? That is this point. इसका आपने करना क्या exactly इस point का? So this point, there's s of course, so it's like ये जो point है just this, and then oh god, ये अजीब है. राइट एंगल आइसोसेलेस कुछ तो भी तो इसमें हो जो कि अपन somehow यूज कर पाए. Like this length looks, I've seen that somewhere. और ये लेंथ क्या होगी? So s to p वाली लेंथ, क्या होगी? So of course like ये चीज, what do I have to do this thing? Eccentricity times ये distance from here to here, ये क्या होगा? Negative a upon e, right? So just a cosine theta plus a upon e. So basically like what? A times of 1 plus e cosine theta, I guess. That's this distance. And this distance is like what? A times of 1 minus e cosine theta. So now it doesn't, like it's not isosceles. It's not isosceles. Now what? This is not making any sense. This doesn't look isosceles to me. Equivalent कुछ भी यानी नहीं. Right angled at what point though? So you can of course figure out this vector from there to there. It's like a e plus that. This is one thing. Where should this be right angle? I guess maybe ये वाला right angle देगा. दिख तो नहीं रहा ये बाकी दो right angle. So we'll have to see for that. अच्छा ये क्या हो जाएगा इसका? A common ले लो completely. What you get is like e plus minus cosine theta times ये चीज, right? Yeah. So like cosine theta minus e cosine square theta, then comma sin theta minus e sin theta cosine theta. That's ये बहुत लंबा होने वाला है. I don't think it's the right thing to do this actually. शायद से कुछ होगा भी नहीं, मतलब auxiliary circle, seriously, tangent to the auxiliary circle. नहीं, this doesn't make any sense because अपन ने ट्राई कर लिया और कुछ अच्छे से मिल तो नहीं रहा है मुझे, I guess. Yeah, so I don't know. T is this thing. Like T को अच्छी तरह से लिखो, a times of what? Cosine theta plus e sin square theta, and this is a sin theta minus e sin theta cosine theta. Okay, what is your p? P is just a cosine theta comma b sin theta, and s is a e comma 0, right? Okay, wait a second. Oh, अपन ने दूसरा वाला फोकस यूज कर दिया. Okay, this is not supposed to be the thing. Oh, in that case, so distance from the focus for
P क्या होगा? In fact, it's not this thing. It's like A upon E minus A cosine theta, and that times of E. So basically ये चीज. So हाँ, it actually turns out to be the same as that. It's isosceles. It is isosceles. So A is the answer, I guess. This doesn't look like it's right angle isosceles, and I don't believe कि वो ऐसा होगा, right? Because tangent यहाँ पर है. So I mean, why would it be right angled? There's no reason for it to be like that. Still, can it be right angled? I mean, isosceles तो है at least. We got कि ये और ये दोनों distances actually में same हो जाएगा because yeah. अच्छा एस टी और एस टी ऐसे यहाँ पे नहीं, एक्चुअली यहाँ पे चाहिए, बट वॉट एवर, राइट? सो वो दोनों सेम हो जाएंगे. ओके, इन दैट केस दिस इज नॉट राइट एंगल इन एनी केस, राइट? सो उसको भूल, या इट इज जस्ट आइसोसेलेस, नॉट राइट एंगल आइसोसेलेस. नेक्स्ट क्वेश्चन 103. If z1 z2 z3 represent the vertices of an equilateral triangle ABC and this thing is equal to sin theta, then theta is okay. So god क्या है ये z2 minus z3? okay, z1 हर जगह पे मुझे दिख रहा है. या आई कैन सी दैट. सो z1 को 0 assume करो because it doesn't actually matter in the end. Or right, so z1 is A, right? This thing is क्या कौन सा पॉइंट्स है? B and C, right? So we'll just say that A to B is a B vector and this thing is C vector, right? Okay, cool. तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ B squared plus C squared अपॉन B plus C का स्क्वायर. ओके, B वेक्टर प्लस C वेक्टर का स्क्वायर इनफैक्ट, राइट? या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, सो हाँ वही होगा. एंड देन प्लस B माइनस C का स्क्वायर. ओके, और C माइनस B या फिर वॉट एवर, डजंट इट? ओके, सो इट्स लाइक व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो अपने आप, ओह just awesome, 1 upon 2 square root of, so sin theta is just 1 upon square root of 2. Theta will be what? Pi upon 4 or 3 pi upon 4 or whatever. So A is the answer. Next question 104. 104 is the value of sum from 2 to infinity of natural log of 1 minus 1 upon n squared. Okay, it's like this thing, n minus 1 times n plus 1 sum कर रहे हो whatever, just like upon n square, but then अपन natural log वगैरह में like natural log product from n equal to 1 to 2 to infinity of this thing, right? So it's like natural log product from 2 to infinity of n minus 1 upon n, in that terms of product from 2 to infinity of n plus 1 upon n, right? Well, yeah, I guess we could change it a bit or something, but whatever. Just gonna use this. Wait, नहीं, ये सही नहीं हो रहा है because हाँ, I get it. It's kind of complicated actually. या जो cancellation होने वाला है वो, yeah, it won't go that smoothly unfortunately. वो जो telescope होगा, oof, it's not go to infinity. Let's just say capital N तक करेंगे, right? We'll go till capital N and then we'll set N going to infinity. Capital N going to infinity, right? Okay, it's like what natural log of, पहले इसको इस पहले वाली सीरीज को देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है इसमें. जस्ट 1 अपॉन 2 टाइम्स नेक्स्ट, यानी कि लाइक 2 अपॉन 3 चलते जाओ टिल कैपिटल N माइनस 1 अपॉन कैपिटल N, ये सब कैंसिल हो जाएगा. जस्ट 1 अपॉन कैपिटल N आ गया, और इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा पहले कैपिटल, सॉरी पहले इसमें आएगा 3 अपॉन 2 टाइम्स, क्या फिर नेक्स्ट क्या आएगा? जस्ट 3 पुट करोगे 4 अपॉन 3 एंड सो ऑन. इवेंचुअली जिस पर कैपिटल N अपॉन 1 प्लस अपॉन कैपिटल N, तो ये तो कैंसिल हो रहा है सब कुछ. इस कैपिटल N प्लस 1 अपॉन 2, so this times capital N plus 1 upon 2, right? That's what this thing will be. ये जो पूरा प्रोडक्ट रहेगा, natural log of what? Capital N plus 1 upon capital N, that times 1 upon 2, right? This is what it will be. Yeah, ये जो sum रहेगा. And as n tends to infinity, capital N tends to infinity, this thing just approaches 1. So ये क्या हो जाएगा? Natural log of 1 upon 2. So C is the answer. Next question 105. 105 is in triangle ABC if sin A upon C sin B plus sin B upon C plus sin C upon B is equal to C upon AD plus. Okay, very weird. Then the value of angle A is, all symbols used have their usual meaning. Okay, so sin A upon sin B is like A upon B actually. So just basically this thing A upon BC plus
Wait, what? I mean, okay, that is the thing, sure, but yeah, I was not expecting this. Was not expecting this. A upon BC plus sine B upon C and oh god. I don't like this. इससे अच्छा कुछ ढूंढना पड़ेगा. Okay, you can always write sin B as 2r upon B, but then ठीक है ना, करते क्या जा रहा है? 2r or use the semi perimeter thing, right? Well, yeah. So, but उसमें summation of sin A वगैरह लगने वाला है. So that's not there. 2r लिखो. 2r upon BC and plus 2r upon BC once again for some reason. Okay, awesome. Wait, मैंने सही से तो क्या नहीं है? Shit, नहीं. नहीं 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 नहीं. It's not supposed to be like this. Sin is like b upon 2r actually. So b upon 2cr and then this is what? C upon 2br. Okay, like this. That's equal to this thing c upon ab plus b upon जो भी है. So like b upon c. हाँ ठीक है ना. Then value of a is अच्छा. ये कुछ सही नहीं हो रहा है यार. और अपन abc कॉमन है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके तो abc से मल्टीप्लाई करा हमने इस पूरी चीज को. तो या so abc से इसको मल्टीप्लाई करा था. व्हाट यू विल गेट, जस्ट गेट लाइक a स्क्वायर. अच्छा a upon bc तो मरने वाला है दोनों साइड से. सो वो तो गया. इट्स बेसिकली दिस थिंग, राइट? सो ये तो मर जाएगा वैसे भी. जस्ट बी अपॉन टू oh yeah, okay, equal to c upon ab plus b upon ac, I believe. A upon b तो गया. So अब abc I guess. So god, बहुत अजीब नहीं हो रहा है. Okay, this can be written in what way? This is like 1 upon a and then there is just c upon b plus b upon a. Sorry, b upon c, right? And this is what? This is 1 upon 2r times b upon c plus c upon b. So guess what? ये cancel हो जाएगा. So मतलब क्या हुआ कि a is equal to 2r, which means like sine of a is equal to 1. So yeah, like capital A must be 90 degree. So this is actually a 90 degree angle. Okay, so B is the answer. Next question. 106. The point 4 comma 1 undergoes the following three transformation successively. First, reflection about y equal to x. So अपने करना क्या है? फाइनल पोजीशन ऑफ द पॉइंट, राइट? ओके कूल. सो फिर भूल जाओ कि हाँ ठीक है. फर्स्ट के बाद में क्या हो जाएगा? 4 कमा 1 का 1 कमा 4. Reflection about y equal to x. Transformation through a distance. What? Distance to unit along the. I think translation बोल रहे. Okay. Distance to units along the positive direction of x-axis. So basically क्या 3,4. फिर उसके बाद में rotation through an angle of pi upon 4 about the origin in the anti-clockwise direction. Okay, so multiplies by I e pi upon 4. Okay, this is very weird. E power I pi upon 4 से multiply करना है for some reason. 3 plus 4i को. Okay. ठीक है ना, करते 3 plus 4i. 1 upon 4 तो बाहर निकल गया. Just 1 plus iota in that case, right? Well, yeah, it was sure. What else would it be? Just 1 upon square root of 2. 3 minus 4, right? So like minus 1. And then और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो I के लिए आएगा is just 3 and then 4. Wait, no, like 3. Shit. 3i and then 4i. Okay, yeah. Which is 7i. So negative 1 comma 7. So yeah, negative 1 upon square root 2, 7 upon square root 2, which is C. Next question. 107. This sum for n equal to 10 is equal to like 1 upon 1 factorial and 1 factorial. I've seen that somewhere, right? Yes, I've seen that somewhere. So it's like 1 upon n factorial, फिर n factorial upon so nc1 आ गया यहाँ पे. पहले तो nc1 plus nc2. You can see what's going on. चलते जाओ till eventually तो वापस 1 factorial like ncn minus 1 basically. Yeah, nc0 और ncn को ऐड कर तो just तो ये क्या हो जाएगा? 1 upon n factorial 2 power n minus 2 in this case, right? So it's like, yeah, this is the thing. For n equal to 10, it's just 2 power 10 minus 2 upon 10 factorial, which is C. Next question. 108. 108 is midpoint of the chord cut off from the line x plus y equal to 3 by the circle x squared. Oh god. So midpoint चाहिए अपने को. That's okay. No line दी है. Wait. Cut off by this line by this. Hey, I know a way.
y इक्वल टू 3 माइनस एक्स इसमें पुट करो, यू विल गेट एस इक्वेशन इन एक्स, x1 x2 का एवरेज निकालना है बस, इजी एज दैट। ओ या, सो लाइक क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, सो लाइक जस्ट वांट वाई स्क्वायर, वाई के लिए मतलब ये एक्स इज लाइक 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, minus 2x minus 4, right? Which is what? 2x square minus 8x plus 5 is equal to 0, right? So x1 plus x2 कितना होगा? Just 4. तो upon 2 is like 2. So x coordinate 2 आ जाएगा, which means y coordinate, y midpoint जो भी है is just 1. So 2, 1, which is A. Next question. 109. 109 is let a red dye, blue dye, green dye, and a white dye are rolled once the dyes being fair. अच्छा, 4 डाई है, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, ओके, वंस, चारों को एक एक बार, ओके, कूल। द आउटकम्स ऑन द रेड ब्लू जो भी है डिनोट नंबर ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, सो इसका ए बी सी डी जो आउटकम्स है वो, ओके, दैट ई बी डिनोट द इवेंट दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस थिंग, गॉड व्हाट इज दिस इज इक्वल टू 1, देन पी ऑफ ई इज, वेट व्हाट, oh so like ये 1 या फिर नेगेटिव 1 ही हो सकते हैं, oh this is not good, this cannot be negative 1, तो फिर a must be 2, that we know, so a तो 2 है for sure, b can be 1 और okay तो case work करना पड़ेगा whatever, uh, it's kind of complicated isn't it, में से कोई ना कोई एक तो होगा जिसको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा in any case, right? कि a तो 2 रहेगा, right? कॉलम्स बना लो और एक बार you know let's, so a तो 2 रहेगा ही, उसका भूल जाओ, बी सी डी के बारे में सोचते हैं, राइट, ए तो 2 है ही, वी नो दैट। अच्छा बी सी डी के बारे में देखते हैं, व्हाट कैन बी द थिंग, लाइक बी 3 हो सकता है, अगर बी 3 है देन ये पॉजिटिव 1 आ गया यहाँ पे, एंड देन दिस कैन बी पॉसिबल लाइक ओके 4 एंड 7 तो नहीं, ओह सो लाइक डी कैन नॉट बी, डी कैन ओनली बी 5 इन दैट केस, राइट? So D can be only 5 because 7 is not in the list. So D is 5 for sure. तो इनमें से कोई भी एक को negative 1 होना पड़ेगा. If B is 3, C has to be 2. If B is 1, C has to be 4. It cannot be 2. Right? So इसलिए negative हो जाए. Okay, that's the thing. So क्या 4 तरह से ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा, yeah, okay, cool. हाँ तो probability of E क्या है? चार ऐसे कॉम्बिनेशन से वो हो सकता है, सो 4 अपॉन, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, और टोटल कॉम्बिनेशन क्या था, ओके हर एक में 6 आने वाला, 6 पावर 4 आई गेस, या दैट्स द थिंग आई गेस, मैंने 4 के अभी 2 ही तो कॉम्बिनेशन है यार, मैं क्या कर रहा हूँ फिर, बस ओनली 2, सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन है कि ऐसा हो सकता है, राइट? या मतलब 1/6 टाइम्स 1/6, और फिर बी सी के लिए लाइक okay, so BC level like 2 upon 36, something like that, right? Yeah, that's why this thing. Whatever. Answer क्या रहा तुम्हारा? 1 upon 3 times of 6 power 3. So 1 upon 3 times of 6 power 3 36, 30, 216. It's like what? 1 upon 6, 3, and then 18, so just 6, 4, 8. Which is B. Next question. 110. 110 is the number of quadratic expressions with the coefficients drawn from the set this is, अच्छा wait what, just मैं ABC देखना है क्योंकि expressions like 3 digit numbers basically इतना ही है और कुछ भी नहीं है, because start का 0 नहीं हो सकता, हाँ ओके, तो start का 0 नहीं हो सकता, start के लिए थोड़ा सा 3 choices है, या तो start के लिए उसमें 3 choices है, फिर that times तो तुमने एक exhaust करा तो मतलब से वापस 3 choices आएगी, because हाँ ठीक है, and then फिर next वाले के लिए 2 choices. That makes sense. So yeah, just 18. That's number of expressions, right? Like yeah, right? How can that be? Wait, what? Oh, it says minus में 3 right? Oh, wait. So from this with repetition, I think. Ah, okay. You should have told me. If this is with repetition, then like if it's just 4 times 4 आ जाएगा. Huh? You should have told me really. Just 48 in that case because 16 times 3. 111.
I thought without repetition, but fine. This integration is what? This one is 1 dx upon x square plus x plus 1 square root of x plus 1. Okay. As you can see, like if x square plus 1 आ रहा है, we could always just put x equal to tan theta, right? Let's see what happens. If x equal to tan theta, then यहाँ पे क्या हो जाएगा? Secant theta. Let's just try it out, you know. So s minus c upon c ऊपर आएगा, फिर dx के लिए just secant square is like 1 upon c square, and then you got dx upon, so just first of all secant theta is like 1 upon c. Okay, वहाँ पे. And then ये चीज़ क्या हो जाएगी? Just secant square theta plus tan theta is like 1 upon c का square plus s upon c. So basically like what? 1 plus sc upon c square, right? Yeah, I mean that is the thing. So ये तो cancel हो गया पूरा पूरा. Awesome. It's just what? Integration of s minus c upon 1 plus sc times dx. Hey, you know what this thing is? Yeah. Sc can be done is like s minus c. Wait. S minus c, huh? Negative integration of c minus s dx, which is like d of c, d of s plus c, I guess, upon 1 plus sc. But then remember that sc को अपन लिख सकते हैं, right? Okay, this can be done as like what? First of all, I would like 2 over here, so just 2 plus 2 sc, which is like 1 plus 1 plus 2 sc. But then 1 plus 2 sc क्या होता है? Just s plus c का square. It's just this thing, s plus c का square. It's what? Negative 2 tan inverse of sine plus cosine x. Yeah, so, that was weird. Sine theta actually. And what was our initial assumption? X equal to tan theta, right? Just negative 2 tan inverse of. So tan theta is x, x1. Yeah, this square root of x plus 1 आ जाएगा. And yeah, I mean, that should be the thing, right? S plus c, huh? Am I sure मैंने ऐसे ही किया था? यहाँ पे x plus 1 कैसे आ रहा है? कोई गड़बड़ हुई है नहीं? Yeah, like what went wrong? Huh? S plus c का square, right? But yeah, कुछ गड़बड़ हुई क्या अपनी सच में? नहीं, नहीं, तो सही, कुछ सही तो जा रहा था यार. There can't be any problem. No, this was correct. Just 1 plus sc for sure. So, ये कैसे हो गया? Okay. No, it has to be just this thing. Negative 2 tan inverse of s plus c. Right? Okay, yeah. X was, right. X was just tan theta. That's what we did to get everything. So x was tan theta. So like ये x और 1. Okay, जो ये theta हो जाएगा. You want sin theta plus cosine theta, right? Exactly. Let's see what this turns out to be. So for sine theta, just like x upon square root of x, and then for cosine theta, just 1. So like x plus 1 upon square root of x plus 1, I believe. How is this thing? Wait, what? Oh, okay, तुम ऐसे लिख रहे हो like cosine inverse and sine inverse की terms में. Okay, cool. Plus some kind of constant, whatever. Okay. Interesting. I think I know what I should be doing. So let's just say कि x plus 1 upon square root of x square plus 1 is equal to what? Like tan theta. This will just become like negative 2 theta. So negative of, so what is cosine of 2 theta though? Right? Or sine of 2 theta, दोनों को ढूंढ लेंगे. So cosine of 2 theta, for that just want like square root of 1 minus t square of 1 square root of 1 plus t square of 1. Okay, it's like square root में क्यों डाल रहा हूँ मैं, सॉरी. क्या कर रहा हूँ मैं आखिर ये. और इसमें क्यों स्क्वायर रूट आ रहा है? इसमें स्क्वायर रूट की क्या जरूरत है? वेट, व्हाट? इसमें स्क्वायर रूट कैसे आ गया आखिर? This should not be thing. This should not be working. Okay, what is this? Why is there a square root? Square root? What? There's no need for a square root. कैसे कुछ भी? ये सही नहीं हो रहा है. क्या कर दिया इन लोगों ने यहाँ पे? It should just be this thing, right? X plus 1 upon square root of x. Yeah. What went wrong? What went wrong? Square plus 1 plus 2x. Okay, that might have made sense. Okay. 1 plus 2x upon x square plus 1. Maybe. Like 1 plus. Okay. नहीं, कुछ गलत है यार. ये कैसे तुम इसमें स्क्वायर रूट कैसे ला सकते हो?
और वो 2 का क्या हुआ? अच्छा ये है कि नहीं है? लुक फॉर दिस गाय एक्चुअली। ठीक है, विल लुक फॉर, चलो एक एक ट्राई करके देखते हैं, शायद से इसलिए स्क्वायर रूट आया क्योंकि हाँ सो देखिए इस वजह से आया। सो जस्ट सॉर्ट ऑफ एक्स प्लस वन यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे एक्स प्लस वन आ जाएगा, एंड देन व्हाट यू हैव, वो नेगेटिव का अपन tan कॉट में हाँ सो लाइक 2 कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करा, यू नो कॉट इनवर्स ऑफ दिस थिंग। सो एक्चुअली यहाँ पे एक्स प्लस वन, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक्स प्लस वन आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस वन प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन एंड प्लस 2 इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अच्छा समझा कैसे हुआ? दिस इज एक्चुअली थीटा वाला लाइक 2 sin, और ये स्क्वायर रूट चाहिए ऑफ कोर्स, सो 2 sin इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन 2 टाइम्स, समझा, विच इज डी। ओके इट मेक्स सेंस। वही तो बोलूँ कि वो स्क्वायर रूट पूरे इस पे कैसे आ गया? अगर कोसाइन, तुम कोसाइन ऑफ 2 थीटा अगर यूज कर दे तो फिर नहीं आता। there's only one way कि साइन तुमने डायरेक्टली किया होगा विदाउट डबल एंगल फॉर्मूला। ओके, in triangle ABC, if A minus B is equal to 120 degree and R is equal to 8, R the value of this thing is, okay, A minus B 120 degree angles, okay cool, and R is equal to 8R, I think this is important, so like fine, try it out। क्या था अपना that R will be like 4 capital R and then sine A upon 2 cosine sine B upon 2 and sine C upon 2, right? That was the thing I guess, because as much as I remember, यही तो था, that was the thing, right? uh, अंदर में क्या था, cosine cosine and then sine, like that, right? Wait, do I really have to derive this? So R is equal to what? R is just equal to the same perimeter upon summation of sine A. Okay, and what about small r? So like small r is, how do we get that though? So ये जो रहेगा, okay, ये क्या A upon 2 है, and then ये small r रहने वाला है, and then what is this thing? What is this thing? It just cot A upon 2 or something, right? Wait, what? Yeah, yeah, that is the thing. Sure. So इसका मतलब क्या हुआ? That cot A, so it's like what? R cot A, so 2R यहाँ पे भी आएगा ना? Yes. So 2R cot A upon 2 plus 4 cot B, it's like summation of cot A upon 2. This thing is equal to the perimeter. So like what we get is, this is just for the same perimeter. So like R is equal to, अच्छा इसको change करो, so like A upon कितना होता है, 5 upon 2 होता है ना? Yeah, it works out just that way. So for example 60 degree put करोगे, देखो तो मुझे मिलता है cot of 30 degree, which is like sort of 3, so sort of 3 times होता है, just सही से कर रहा हूँ क्या? क्या मैं चीजें कर रहा हूँ? 3 square root of 3, 3 square root of 3 is equal to product, yes it is the thing, so okay, this can be as like what, R product of cot A upon 2 is equal to S, मतलब कि क्या, R is equal to S product of tan A upon 2 and capital R is equal to, so ये जो चीज है, और okay, S is equal to R summation of sin A, which is like what, 4R product of cosine A upon 2, तो फिर just put that in there, like R is equal to 4R product of sine A upon 2, that makes sense। okay, so अपने को ये यूज करना है, and what that actually gives us like is, in this case क्या हो रहा है एक्चुअल में, कैपिटल R is equal to 8R, तो यहाँ पे क्या 32 आ जाएगा ना, so product of sine A upon 2 is just, well this is very weird, for some reason capital R equal to 8R, ये 1/32 हो गया, I get it, but it's just weird। what do we know, like summation of cosine A is equal to, यार बहुत लंबा नहीं हो जाएगा वो इस टाइप से? हो तो जाएगा, बट और कोई तरीका है क्या पास में? so A upon 2 minus, okay this is very weird, like A is actually B plus 120 degree, so C क्या होगा, what do you know, like A plus B plus C equal to 180 degree, right? so 120 degree plus 2B plus C is equal to 180 degree, मतलब कि C is equal to what, 60 degree minus 2B। okay, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? that's what C is, fine, you want like 1 plus cosine C upon 1 minus cosine C somehow, ah
इसमें करना पड़ेगा ना इसका. यस, मस्ट डू समथिंग अबाउट इट. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर प्रोडक्ट ऑफ साइन ए अपॉन टू, दैट्स इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 8, तो प्लस 1 करो, जस्ट 9 अपॉन 8. बट व्हाट इज दिस थिंग गोइंग टू बी? जस्ट, yeah, it is like summation of cosine of a. So cosine a plus cosine b plus cosine c is equal to 9 upon 8. But what do we know that? Okay, सब कुछ c के टर्म्स में लिख सकते हैं ना अपन. I guess so. What was the thing once again? कि 60 degree minus 2b is equal to c, right? ठीक है, वो बाद में ढूंढ लेंगे, अभी इसे फोकस करते हैं. So this is like 2 cosine of a upon plus b upon 2, which is what, pi upon pi minus c. Okay, like fine. Sine of c upon बचेगा ना, sine of c upon 2, and then cosine of difference, so like that is just 120 degree upon 2 is just 60 degree, तो यहाँ पे 1 upon 2 आ जाएगा, फिर तो मर गया. हाँ, yes. So this plus cosine c is equal to 9 upon 8, you are saying. मतलब क्या हो जाएगा basically? God, this is very not good thing. This is like what, इसको s बोल दो, is just 1 plus s minus 2s square is equal to 9 upon 8. So 2s square minus s plus 1 upon 8 is equal to 0. Okay, not looking good. 16s square minus 8s plus 1 is equal to 0. So 1 minus 4s का square है ना, ये लग तो रहा है. So s is just what, 1 upon 4. So sine of, c upon 2 is this thing, 1 upon 4. ये चीज क्या है? This is just what, this is like cot square of c upon 2, I think. Something को ढूंढना है, cot square of c upon, well, what is cosec square of c upon 2? 4. ये क्या हो जाएगा? 4 minus 1, 3. Wait, what? 15, 12? ये कैसे कैसे नंबर्स आ रहे हैं? कुछ भी. Something's wrong about this. Oh नहीं, it's 16 minus, right. Cosec square c upon 2 16 होगा, sorry. So fine, just 16 minus 1, which is 15. So B is the answer. Next question. 113. क्या है, मुझे टाइम पे डिराइव करना पड़ा. दिस इज नॉट गुड. रिवाइज कर लेना चाहिए था. 113. Suppose that f is twice differentiable real valued function such that f double dash is bigger than 0 for all x in some range. Value of c in a to b at which the area between y equal to f of x, the tangent to the curve at x equal to c. Huh? And the ordinates x equal to, अच्छा तो ऐसा. Wait, क्या f double dash is always positive, you are saying? Okay, so maybe like, I don't know, ऐसा कुछ भी फंक्शन है शायद से a पे, ऐसा okay, something like this, right? So a and b, okay, maybe it's like this. So यहाँ पे ये tangent है, so you're saying the area between the tangent, the curve, and what, and these ordinates, so ये area. What about this? Is minimum. अच्छा तो ऐसा c जहाँ पे ये चीज मिनिमम हो. Oh, okay. This is kind of weird, but whatever. It's like, अच्छा तो एक बात बताओ, ये जो इंटीग्रल रहने वाला है, दिस इज एक्चुअली फिक्स्ड, राइट? सो एक ही चीज है कि अपने को ये जो है एरिया, इसको मैक्सिमाइज करना है, राइट? व्हाट इज दिस एरिया गोइंग टू बी? एक सी वैल्यू है, वहां पे तुम्हारा एफ डैश स्लोप है, राइट? ओके, दिस इज सी, दिस थिंग इज बी, सो लाइक सी माइनस बी. या ओके, इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली. उफ. सो यहाँ पे एफ ऑफ बी तो आएगा, बट देन वेट, एफ ऑफ बी नहीं है. ठीक है, इट्स लाइक दिस थिंग इज एफ ऑफ सी प्लस जो अपना एफ डैश ऑफ सी है, दैट टाइम्स ऑफ दिस थिंग, सो जस्ट सी माइनस बी. एंड देन ये जो चीज है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, सिमिलरली लाइक ओके एफ डैश ऑफ, क्या करना था मैं? हाँ, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, आई गेट इट, बट लाइक इट्स ऑन राइट, लाइक दिस थिंग एफ डैश ऑफ सी टाइम्स it should be b minus c, right? Yes. और यहाँ पे बस a minus c आएगा, but whatever. What do you want? Just want the area, right? So ये length तो same रहेगी हमेशा. We just want this sum to be the maximum. So ये sum maximize करना है अपने को. So like 2f of c plus f dash of c times, okay, तो add कर दिया, right? Because
ओके, नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, बट ठीक है, इसको अपने को मैक्सिमाइज करना, सो इसको उधर पुट कर दिया, देन दिस इज बिकम्स a plus b minus 2c. This is the function that we're looking for. So we want to what? We want to maximize this thing, right? Acha. So we know that f double dash is always positive, so like f dash is increasing functions as c increases, this thing increases, but यहाँ पे negative है. क्या problem है इसकी? अब आगे क्या? Just take a derivative for this. Call this like capital F of c. So f dash of c क्या हो जाएगा? want to see कैसे होता है, मतलब change कैसे हो रहा है f का? This is so weird यार. ये क्यों मैं कर रहा हूँ? So want this to be the देखते हैं क्या होता है. ये क्या हो जाएगा? It's just 2f dash of c plus f double dash of c times a plus e minus 2c. उसके बाद में minus f dash, okay, 2f dash of c in fact, because वो तो मर गया actually, right? Because वो derivative. So yeah, oh ये तो cancel हो गया, बढ़िया. So just this thing. Okay, so इनिशियली क्या था, इट्स लाइक दिस थिंग a plus b upon 2 जो उसका मिड पॉइंट है माइनस c. सो बिफोर द मिड पॉइंट दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव, तो फिर ये इंक्रीज कर रहा है, राइट? ये दैट्स व्हाट यू वांट. सो एक्चुअली एट a plus b upon 2 ये मैक्सिमम हो जाएगा, उसका फिर डिक्रीज करना शुरू होगा, व्हिच मींस a इज द ऑप्शन. a इज राइट. सो इस पॉइंट पे ये इट विल बी लाइक द मैक्सिमम एरिया एक्चुअली, maximum or like minimum. Wait, what do you want? You want the this area to be minimum, right? So you want this to be maximized. Yeah, in that case this is the thing, maximize तब होगा जब यहाँ पे आ जाए. Okay, next question. This is a, sorry, 114. Let theta belong to real and this sum, okay, equal to a, the value of this, okay, was what? Cot cube of 2 power k theta minus cot of 2 power k theta. Then you want like sine power 4 2 power k theta. What? And what we have been doing is like sine 2 power k theta, just uska sum, right? Okay, think about it. वो एक cot तुम यूज करके just cosine में कन्वर्ट कर सकते हो, that's one thing. Then वो cosine से तुम कन्वर्ट करा लो, then just have cot squared minus 1, so cosine theta आ जाएगा एक, right? Let's try to do this thing. So cot cube minus cot is like cot, यानी c upon s बाहर आ गया, it's just what you have, just cot squared, which is c square upon s squared minus 1, and then यहाँ पे क्या है, s power 4. So ये एक तो गया, just s power 3, right? फिर वो अंदर घुसा दो, like sc, और एक s square अंदर गया, like c square has s square. So what is this? Is like 1 upon 2 sine of 2 power k plus 1 theta for sine of 2 power k plus 1 theta, which is like 1/4 of sine of 2 power k plus 2 theta. So इसका summation from k equal to 0 to infinity is like from k plus 2 equal to 2 to k plus 2 equal to infinity, right? So basically like summation 1/4 summation, हाँ समझ गया ना, 1/4 अल्फा और ये जो भी चीज़ है a जो भी. So B is the answer. Next question. 115. And 5 is that f of x be equal to this integration, then f of x plus f of 1 upon x is. Okay. ठीक है, so like what will f of 1 upon x be? Just integration from 1 to 1 upon x. God. Huh. So for that we'll just need to take some stuff out. Like we'll just take negative 1 upon t outside, and then यहाँ पे negative 1 upon t वो हो जाएगा अपने आप. Yes. You would want something different actually. ठीक है, करके देखते हैं. So first of all what we'll put is that t को 1 upon t से रिप्लेस करते हैं. So यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेचुरल ऑफ t आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 plus 1 upon t, यानी कि क्या t plus 1, और फिर t ऊपर जाएगा, राइट? और then dt is like negative 1 upon t square, and then you just want dt once again. Okay, cool. This is very very weird actually. So ये क्या हो जाएगा, जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ t अपॉन t प्लस 1 जो कि पहले था, इन दैट टर्म्स ऑफ 1 अपॉन t फॉर सम रीजन. तो मैंने t को रिप्लेस किया 1 अपॉन t से. It's like 1 upon t equal to 1, so t equal to 1 actually. And then 1 upon t equal to x, so like t equal to what? 1 upon x.
So f of x can also be written in this way, I guess. Okay, I just want what t. So f of 1 upon x क्या होगा? Integration from 1 to x of ये सब चीज and then it's like 1 upon t. तो जब f of x plus f of 1 upon x करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? 1 upon t plus 1 यानी कि 1 plus t upon t. So इसलिए अपने को natural log of t upon t dt मिल जाएगा. In that case, not 0, just 1 to x. And that's like what? Natural log of t squared upon 2. So फिर natural log of x का square upon 2 minus वो तो 0 हो गया. So just this thing. Not negative or whatever. So yeah, it's just positive natural log of x square upon 2, which is a. Next question. Next 116. Okay, if the line y x equal to y equal to z intersects the line ax plus b, what? Wait, what? ये एक line है just 1 1 1 टाइम r. Okay, cool. Intersects this line. ये line है. And this, okay. अच्छा, जो जो तीनों की तीनों है उनका एक ही सॉल्यूशन सेट है somehow. तो ये इसमें जो लाइंस की बात, ये क्या, ये प्लेन है ऑफ कोर्स, बट देन दिस टाइम्स, ओके, तो ये दोनों कंबाइन करके दिस इज जस्ट वन लाइन, राइट? इसमें लाइंस क्यों दिया है? इसमें सिर्फ लाइन बोलना है यार. ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, कंबाइन करो जस्ट एक लाइन रहेगी. यस, सो फिर x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू r पुट कर दो ना. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. व्हाट सेइंग इज लाइक sin a प्लस sin b प्लस sin c इज इक्वल टू 2d स्क्वायर अपॉन a, a नहीं सॉरी r. एंड यहाँ पे कर रहा है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन r. सो बेसिकली तुम ऐसा बोल रहे हो कि ये इज लाइक 2 टाइम्स this thing, summation of sin a is equal to 2 times summation of sin 2a. That's all it's saying. Yeah, but this can be done as what? So ये 4 4 तो हटा दो, right? Just this thing, product of cosine of a upon 2, and this is like 2 product of sin a upon 2. So not a upon 2, just a in fact. Think about this. जब तुम्हारा a 60 डिग्री होता है तब क्या होता है? Okay, 60 degrees, or yeah, I mean that is the thing. So just yeah, it works out perfect. So this is the thing. मतलब इसको अपन लिख सकते हैं 16 product of sin a upon 2 cosine a upon 2, because हाँ, so इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मर गया, ये टर्म सारा कैंसिल हो गई. So product of sin a upon 2 is just 1 upon 16, which is C. Next question. मतलब लगा ही था ना a plus c equal to pi, और तो पता ही. Okay, next question. 117 is if ABC, PQ are AB, PQ are non-zero real numbers, the two equations have, ये दो इक्वेशन का क्या है? So 2a square x square minus 2abx plus b square equal to 0. Okay, ax को u बोल दो. Okay, ये गंदा एक और चीज कुछ दे दिया सीरियसली. और ये नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है, तो करना क्या अपने को? नो कॉमन तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है यार? अच्छा, ये सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको अनफॉर्चुनेटली. इज व्हाट p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2. ओके, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली वेरी डुएबल, राइट? बिकॉज px का स्क्वायर फिर 2px टाइम्स q प्लस, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो दूसरा वाला जस्ट x इज इक्वल टू नेगेटिव q अपॉन p है, राइट? और ये जो है इसकी सॉल्यूशंस अपने को इट्स नॉट लुकिंग गुड एक्चुअली. दैट्स द प्रॉब्लम. इट्स लाइक, ठीक है, क्या कर सकते हैं? तो जैसे ax अपॉन b इज इक्वल टू u, सो इट्स लाइक 2u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मतलब कि क्या? u इज इक्वल टू माइनस b. ओके, 2 प्लस 1 स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर इज जस्ट 4 माइनस 4ac इज जस्ट वेट व्हाट? ओह शिट, इसके लिए तो रियल सॉल्यूशंस ही नहीं है इनफैक्ट. हाँ, मैं शुड हैव एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये क्या है? u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1 प्लस u स्क्वायर, तो फिर ऑफ कोर्स इसके रियल सॉल्यूशन नहीं होगी. इसके कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस है और इसके रियल सॉल्यूशंस है इनफैक्ट. So no way that they can have a common root. हाँ, कोई कॉमन रूट नहीं होगी इनकी. क्या क्या है ये? हाँ, सो ए इज द आंसर. ओके, मुझे लगा वो ऑप्शन में नहीं है. ओके, बस ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है इसके और इसके रियल रूट्स है. doesn't make any sense. Next, this equation represents sort of x plus sort of y equal to sort of a. So the तो फिर like what is this? Y is equal to a plus x minus 2 square root of
ax, I guess. Yeah. So इसको तरह पेज पे just what x minus y plus a is equal to 2 square root of ax, मतलब कि x minus y plus a का square is equal to 4ax or something, right? So ये क्या है? It's like line 1 का square is equal to line 2, but ये perpendicular नहीं है for some reason. It's not a parabola, unfortunately. It's not a parabola, sure. But you can write it like that, right? You can at least do that thing. So, mm, yeah, what do you say? Let's try it out. Who knows? Actually, हो जाएंगे. So we'll just say x minus y plus a upon square root of 2 is equal to what? Just say it's equal to u. So then, of course, we'll have to select x plus y upon, just say x plus y upon square root because that's equal to v, right? So, of course, u equal to 0 and v equal to 0. What that means is like कि x और y just a upon 2 हो जाएगी. We don't care really. So मतलब ये क्या हो रहा है इसका? It's just like 2u square is equal to 4a times x, but then what is actually x? Uh, add these, what do you get? Just get like 2x plus a upon, एक काम करो यहाँ पे a डाली दो because ये बहुत complicated हो रहा है. Just 2 upon square root of 2 is equal to u plus v, which means कि x plus a is equal to u plus v upon square root of 2, I guess, because वैसे भी अपने अपने यहाँ पे like 2 अगर आने वाला है, so हाँ, it's like this thing, square root of 2 times x, the square root of 2 times of a is equal to u plus v. Square root of 2x is equal to u plus v minus square root of 2a. ठीक है, जो 2 square root of 2 times that thing, so 2 square root of 2a times u plus v minus square root of 2a, right? It's like this thing. It's just 2 square root of 2a times u plus 2 square root of 2 times a times v minus 4a squared. Okay, so yeah, it's kind of like a parabola because एक का स्क्वायर है, एक का नहीं है, उधर भेज दो उसको, वो हो जाएगा अपने आप, राइट? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. या इट्स लाइक 2 बाहर निकाल, जस्ट u स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. ओके, थोड़ा सा अजीब हो रहा है, बट व्हाटएवर. इन द एंड इट्स अ पैराबोला, राइट? ओके, सो दिस इज a. Next question. Yeah. Okay, next. Number 9 is the radii of the described circles of triangle ABC are RA, RB, RC. If RA plus RB equal to 3 capital R and RB plus RC, okay, then the smallest angle of the triangle is. What do you mean by the described circles? I guess तुम external circles, X circles की बात कर रहे हो ना? ठीक है, understood. So कैसे थे वो like वो radii का अपन क्या बोल रहे थे? हाँ, so RA और R small है, whatever, that is equal to 4R, क्या लिख रहा हूँ मैं, 4R cosine A upon 2 cosine B upon 2 and then sine A upon 2. As much as I remember, this was the thing, right? Yes, that was the thing, of course. This really was the thing. Okay, so तुम बोल रहे हो क्या कि RA plus RB is equal to 3R, sorry, 3 capital, which means like 4, so just 3 4 वहाँ पे डाल दो, it's like this thing. Cosine, इसमें C चाहिए था, wait, ये C चाहिए था, whatever, cosine C upon 2, sine A upon 2 cosine B upon 2 because A में आएगा, and then और क्या है, ए तुमने ये भी दे दिया मुझे, आर बी प्लस आर सी, तुमने 2R दे दिया. ओ यू शुड हैव टोल्ड मी. हाँ, तुमने आर ए प्लस आर सी नहीं दिया है. स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल्स, यू फिगर आउट. यहाँ पे क्या, साइन ए कोसाइन बी प्लस कोसाइन बी, वो हो जाएगा. So just get cosine C upon 2 and then like sine of A plus B upon 2, but that's just cosine C upon 2 because pi upon 2. So फिर cosine C upon 2 का square that is equal to 3 upon 4. Similarly यहाँ पे क्या होगा, cosine square of A upon 2 is equal to 1 upon 2, right? So ठीक है, C upon 2 क्या हो गया, this is just square root of 3 upon 2 आएगा यहाँ पे, so C upon 2 should be something like
क्या कर रहा था यार मैं? Yeah, it's just 30 degrees. So C will just be like 60 degrees, I guess. So C is 60 degrees. Okay, what about this guy? So 45 degree आएगा, क्योंकि E is just 90 degrees. मतलब कि B कितना होगा? 30 degrees. Smallest angle 30 degrees. हाँ, 1/2. बहुत ही बढ़िया. God, why are you doing this to me? B 30 degrees है. It's not this thing. Tan inverse of square root of -1. No. 1/2 tan inverse of square root of 3. I don't think that's correct. It's just tan inverse of 1/square root of 3. So, huh. 1/2 tan inverse of this thing. I just square root of 3. So, okay, we'll try it out. So it's 1/2. So it's like, God, tan of 30 degrees, like what? Tan of 60 degrees बात करते हैं. Wait, नहीं, वो तो. Oh, okay, this is actually just 30 degrees because 60 degree आधा. So B is the answer. Next question. Huh. Yeah. 1, 2, 0. 120 is let D sub K is the K into K matrix with zeros in the main diagonals. Unity as the element in the first row. As the element of the first row. Huh? And Fkth column and K for all entries. Fk. What is Fk? Okay. And f of K is the integer part of K basically. Okay. So determinant of D2, D3. Come on यार. तुम्हें 2 और 3 डालने थे तो फिर इसमें ये सब करने की जरूरत क्या है? Integer part of K, which is also just K because वो खुद ही integer है. What's the thing? What is this seriously? So just okay, let's try it out. So D2 की बात करते हैं. D2 determinant of D2. Okay, पहले D2 क्या सोचते हैं? It's just a 2 into 2 matrix. 0 main diagonals में. Okay, और फर्स्ट रो में क्या है? Just 1. Okay, and K for all other entries and also the Fk column में 1 चाहिए. So इसमें Fk क्या होगा? Fk is just K actually. So K is 2. So second column. What? But second column में तो 1. Okay, okay, समझा. So first row and Fk समझा मैं. Okay, so right, and K which is like 2 over here. Okay, cool. That's the thing. So yeah, just -2. मतलब कि ये just -2 है and then D3 क्या होगा? D3 में ऐसा है. So just 0 0 0. ये एकदम साइड में 1 है. उतना ही बोल रहा है ये. और फिर क्या आ जाएगा? 3 3 3 3 3. राइट. ये 1 यूज करके ये हटा दो. ये तो मर गए बिकॉज अब डिटर्मिनेंट अपन ढूंढने वाले लाइक उसमें भूल ही जाओ ना. डिटर्मिनेंट की बात करते हैं डायरेक्टली. तो ये तो हट ही जाएगा. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. सो जस्ट दिस थिंग. या तो लाइक ये 1 यहाँ पे 3 3 जस्ट 9 0. सो फाइन. सो इसका 9 आएगा एंड इसका क्या? इसका जस्ट -2 आएगा. सो 9 - 2. राइट. आई मीन दैट इज द थिंग राइट. बिकॉज और क्या हो सकता है? वेट, मेकिंग सम काइंड ऑफ मिस्टेक. वेट, क्या था यहाँ पे? वेट, दिस वाज 3. ओह ओके ओके, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक. सॉरी. ठीक है, नॉर्मली करते हैं. जस्ट डू इट नॉर्मली. सो इसमें डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? -2. इसमें क्या रहेगा? 0. ये तो मर गया. ओके, देन यू वांट 3. सो -3 एक्चुअली में ये 0 है. -9. So just 27. फिर यहाँ पे 1 and then just 9. So like +9 I guess. Yes, that is the thing. Just 30, what? 36. Okay. 34 is the value I guess. So B is the thing. Okay, so this is it. 20 questions done. So I guess I'll see you guys in the next video. Bye.